Hello, good evening, and a very warm welcome to all my students, all my class 10 students. How are you? Welcome to CBSE class 10. कैसे हैं सब लोग? How is everybody doing? All right, I can already see people out here. क्या बात है? Hello, and Joffin. Hi, Shivangi. How are you, बच्चा? Hello. Good evening, and a very warm welcome. भाई, warm welcome ही करूंगा मैं आपको क्योंकि यहाँ पे actually बहुत गर्मी है. So, it's really warm. एंड गाइस एंड गर्ल्स जो लोग ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है उनको पता है ना आज क्या होने वाला है। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पोर्शन, द ब्लैक एरोप्लेन। काफी इंटरेस्टिंग सस्पेंसफुल स्टोरी है, धमाकेदार स्टोरी है। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको पूरा का पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। आई एम गोना एक्सप्लेन इट टू यू एंड आफ्टर दैट सर जल्दी से आ जाओ बच्चा। मैं तो आ गया, देखो सीधे एकदम टाइम पे आया कि नहीं। हाँ शिवांगी टाइम पे आ गया ना। ऑल राइट, so we will go through the story and after that we will do a revision Menti so that you guys are crystal clear. All right. So without wasting any more time, let us start. भाई जल्दी से शुरू कर लेते हैं. Let the other people join in. Before that, before we begin with the chapter, you know the drill. Let us go through some information on the Unacademy platform because वो भी आप लोगों को पता होना बहुत ही important है. 10% flat off यार, अब तो आपको पता ही है ये 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा मेरा कोड यूज करके ऑन बोथ Unacademy Plus और Iconic subscriptions, right? So use my code. Don't forget, my code is CHAT10. Boys and girls, my name is Aryaman Chatterjee. I am your English educator, class 9th and 10th, and I have completed my graduation from Delhi University. And उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया मास कॉम में। पढ़ा रहा हूँ 10 साल से, 10+ years I've been teaching, and I love teaching on this platform because now I can connect with people from across the country, all across the country. So that is something that I'm really enjoying. Let me know if I'm audible properly and I'm visible. Sab theek hai na? Sab everything is on point, right? Let me know in the message box. All right. Okay. 8 people already joined in. Superb. Hi, Vaibhav. Hello, Vaibhav. How are you? Who else is here? Who else is here? Shubham. Hello, Shubham, bacha. How are you? Welcome to the session. All right. Awesome. Yes, sir. All fine. Superb. Shivangi बोल रही है भाई सब बढ़िया है एकदम. Ramesh Bind. Hello. Good evening, Ramesh. How are you, bacha? What's Menti code? Shubham, just scroll up. You will find the Menti code. थोड़ा सा scroll up कर दो, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. The Menti code is 5554462. All right. It is given. If somebody already knows it, I think Anne, I have given you the Menti code. Could you just pin it on the message box? That'll be superb. All right. Moving on, Bugs Bounty. I think you guys know fairly about it, but I'll still reiterate. Bugs Bounty is a feature जिसके हिसाब से आप लोग, अगर आपको कुछ भी गलत दिख रहा है YouTube प्लेटफॉर्म में Unacademy के, you can report it. You can report it using the form which is in the description and also win a prize. You can claim a prize if you do find something and if you do report it. So मेरे हिसाब से कुछ भी गलत दिखे, please bindas feel free to report it. All right, on any particular channel. Ask it out. You know what it is. I am going to tell you again, but बता दो. देखो, ask it out एक ऐसा फीचर है जो कि Unacademy learners ऐप पे है. And with that feature, you can solve your doubts without anybody else's help. All you need is your smartphone and the Unacademy learners app. All right, क्या करना है? Very simple steps. Ask it out पे click करो, learners app पे जाके, Unacademy learners app पे जाके, take a picture or choose from the gallery, select a picture of your question, and then what do you do? Crop to highlight that specific question, choose a subject that question falls under, and that's it. इतना ही करना है, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा. हाई रेजोल्यूशन वीडियो इन इंग्लिश एंड इन हिंदी. ऑसम सर, रिमेंबर मी सर. रितिका, ऑफ कोर्स रितिका, आई रिमेंबर यू यार. मेरा आई गॉट अ डिसेंट मेमोरी. आई डोंट हैव अ वेरी शार्प मेमोरी, बट आई डोंट हैव अ बैड मेमोरी आल्सो. ऑल राइट, आई ऑफ कोर्स रिमेंबर यू. आस्क अ डाउट भाई एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको कुछ चीजें नहीं करनी है. If you follow these instructions carefully, you will be able to take care of your doubts without anyone's external help. All you need is the Unacademy Learners app. All right. Hi, study channel. How are you? Hello. Good evening. Sir, rap में intro जल्दी से करना. शिवांगी, हर बार rap यार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. Unacademy subscription features में आपको क्या-क्या मिल जाएगा भाई? Unlimited access to the top educators of this country who are a part of this Unacademy fraternity, like Unacademy organization. एंड टॉप एजुकेटर्स आप लोग को देंगे प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, अ लॉट ऑफ थिंग्स, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ योर सिलेबस
and with that you will also get mentorship and guidance. और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, यस बॉस, डिस्काउंट भी मिलेगा if you use my code. 15 months का जो सब्सक्रिप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन which is for 18,000, it will reduce to 16,200. 18 months का जो 20,000 का it will reduce to 18,000, 20,000 का वो 18,000 का हो जाएगा. So you know the drill. 10% on all the price list which is there depending on the number of months that you are subscribing for. All right. Okay. वैभव बच्चा पहले मेंटी नहीं होगा. पहले सबसे पहले what are we going to do? First of all, we will start with the explanation of the chapter. Then we will go to Menti. So you have to have a little bit of patience. All right. Patience, exercise करो, और अगर एक्सरसाइज करोगे तो फिर तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे, बिकॉज ये जो मेंटी है it is completely it is on that particular topic that we are going to cover today. All right. Unacademy iconic subscription में आपको मिल जाएगा personal mentorship, live doubt solving sessions, weekly report, parent connect and study planner and all the other benefits of Unacademy subscriptions. And if you use my code, which is what it is, CHAT10, you also get a discount, again 10%. 12 months का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है 28,000 का, it reduces to 25,200. 15 months का जो 32,000 का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, which will now after using my code will become how much? 28,800. And subscriber कैसे बनना है भाई? Unacademy app download करो, choose a payment plan, choose a payment method, make your payment, and that's it. You don't have to make the payment in one shot. All right. And start Menti. Nikhil Dahiya, relax. The Menti will happen after we have completed the explanation of the chapter. Please प्रैक्टिस सम पेशेंस. बच्चा पार्टी देखो, पेशेंस भी बहुत जरूरी है. ये मेंटी एडिक्ट नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है? मेंटी को इस्तेमाल करो ताकि आप रिवाइज करके बेटर बन पाओ. आई एम राइट हियर, आई एम गोइंग टू टेक द मेंटी, सो डोंट वरी अबाउट द मेंटी. मेंटी विल कम. आई हैव शेयर्ड द कोड. यू गाइस नीड टू गो थ्रू द चैप्टर आल्सो, ठीक है? जीरो कॉस्ट ईएमआई एंड पे इन पार्ट्स भी कर सकते हो. टॉक टू आवर अनअकैडमी एक्सपर्ट टुडे. एंड 8 अगस्त को जो अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप चल रहा है, मैं आप लोगों को बार बार क्यों बताते रहता हूं? बिकॉज Unacademy's combat scholarship test से आप लोग 1 crore worth of scholarship prizes जीत सकते हो. 30 questions, 45 minutes. क्लास 9th और 10th का 11 AM में है, 6, 7, 8 का 12 PM, 11th, 12th का 1 PM. Enroll now, and while you enroll, don't forget to use my code, which is yes CHAT10. And IIT, JEE and NEET UG जो preppers है, they can also avail some great offers that the Unacademy platform is providing. You can see it right here. Offer is valid till 8 August 21, that is this particular Sunday. So जल्दी कर लेना. और बच्चा पार्टी फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन 2 मंथ और फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन 2 मंथ का है. कहाँ पे? अगर आप सब्सक्राइब करो 12, 15 और 18 months of Unacademy Plus और Iconic subscription. So a lot of free things that you get. Please take a look at it, and the offer is only valid for the first 500 subscriptions only. Hello Khushi बच्चा, how are you? Hello. Hi Jawan son, how are you? Nice interesting name यार. All right सर, आपकी क्लास 10th में कितना परसेंटेज आए थे? मेरे क्लास 10th में मेरे आए थे 78%, if I'm not mistaken. I think it was 78 या 77% roughly. So yes, I did not score that much back then, but back then the papers used to be very difficult यार, बहुत difficult होता था. 10% off, don't forget. And हम लोग के टाइम में there was no MCQ also. So सीधा मार्क्स नहीं मिलते थे. But I'll tell you one thing. You know how much I scored in my English? I scored 90 plus in my English. So उस टाइम में भी with the tougher syllabus, I was still pretty decent in my English. All right. And even science, actually, I was good at science till class 10. Try all the features. Download the app. Don't forget. ठीक है? Hello Sifat. Wow, what a beautiful name. और Ashmit, hi. Hello, good evening. ओके. एंड अनअकैडमी का आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को बता देना. मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ बहुत बार, बोर मत हो जाना. बट वी नीड मोर स्टूडेंट्स वाचिंग दिस सेशन, एंड ओनली माय अमेजिंग स्टूडेंट्स कैन हेल्प मी गेट देयर. सो प्लीज डोंट वेस्ट एनी टाइम. टेल योर फ्रेंड्स. इफ यू एंजॉय माय क्लासेस, आपको मजा आता है, जरूर बताना फ्रेंड्स को. ऑल राइट. And this is the TG link of my other channel that I'm a part of, The Last English Teacher. You're most welcome to join that channel also. And now let us get to the story. Now let's cut the chase. जल्दी मैं आपको स्टोरी के बारे में बताता हूँ. भाई ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. There are some supernatural elements also, some gray areas if I would say. याद है ना gray areas? कल ही किया था हम लोगों ने. कहाँ पे? vocabulary में. Yeah, so some gray areas जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ है. But the beauty of the story lies in the journey of this particular pilot.
वो अपने हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, अपना पर्सनल हवाई जहाज है. He is not boarded on a chartered on a public chartered plane. He is boarded on his own private chartered. भाई अमीर आदमी है ये. The narrator is himself the writer. Let's get to know about the writer थोड़ा बहुत, ठीक है. Learning the crack of what's impossible. Danny Regit. अच्छा, yes, 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 yes. I don't know what that means, but could you please explain it to me? Anyone remembers me from East Menti? Danny Regit. नहीं भाई, आपने नाम ही नहीं दिया था. नहीं, Danny, yes, I remember. Danny, I remember, of course. But यहाँ पे आपका spelling अलग है. Now you are D-A-N-Y. There you, I think D-A-N-N-Y. Anyways, Frederick McCarthy Fawcett. He is the narrator. He is the writer of the story. Born on 25th August 1938. Old guy. He is an English novelist, journalist who is best known for his thriller. और इस स्टोरी में भी थोड़ा सा थ्रिलर एस्पेक्ट है, जैसे कि मैंने बोला ना, ग्रे एरियाज. पूरी तरह से हम लोग को एक चीज के बारे में कभी पता नहीं चलता है स्टोरी में. वो क्या है? You'll get to know that, ठीक है. And best known for his thrillers such as The Day of the Jackal, The Odessa File, etc. Fawcett's work frequently appear on bestsellers list. भाई बेस्ट सेलर नॉवलिस्ट हैं, बेस्ट सेलर राइटर हैं ये. And a dozen of his titles have been adapted to films. So he's also just like Isaac Asimov. Frederick Fawcett is also one of those writers जिनकी stories को adapt किया है movies में. ठीक है. By 2006 he had sold more than 70 million, oh my god, books in more than 30 languages. So translate भी हुई है. चलो start कर दे. Are you ready? सीमा सक्सेना, hi बच्चा, hello hello hello. And who is okay sir, please start Menti. No no Danny, अभी रुक जाओ. Menti में अभी टाइम है बच्चा, Menti में टाइम है, रिलैक्स. पहले स्टोरी देखेंगे. स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? मिड एयर, ठीक है, हवा में स्टार्ट हो रही है स्टोरी. व्हाई? बिकॉज द ऑथर और द नरेटर एज यू वुड से इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन. द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट. सो दैट मींस व्हाट डज इट मीन लॉजिकली? किस साइड वो जा रहे थे? अगर मून ईस्ट की तरफ आ रहा है, सो ही वाज फ्लाइंग टुवर्ड्स द वेस्ट. Behind me and the stars was shining in the clear sky above me. तो crystal clear रात थी. And the narrator, he was enjoying his flight and there wasn't a cloud in the sky. तो बहुत clearly बता रखा है क्या कि बहुत ही अच्छा weather था. There was no clouds, there was nothing. And I am fine. अच्छा sorry. Hello Sunil Kumar. Hi Khushi. How are you बच्चा? So welcome to the session and let us get going. चलो story बहुत interesting है. मेरे को ना रुका नहीं जा रहा है क्योंकि मेंटी भी करना है. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. So we get to know that he is flying across a countryside. कौन सी countryside है? किस country का countryside है? We'll get to know. Don't worry about it. I was flying by Old Dakota. So Old Dakota is name of the aeroplane. All right. Over the France back to England. तो France की countryside के ऊपर से वो उड़ रहे थे. And where he was going? He was going towards England. All right. He apparently lived in England, so that's why he was flying towards his home country. Now moving on, what was the narrator thinking of? भाई वो plane चलाते हुए मजे में, he was dreaming about his holidays and looking forward to being with his family. So he wanted to spend some holiday time, some quality time with his family, right? We all love holiday times with our family. In fact, right now I am in some sort of a semi holiday with my with my extended family, my in-laws. So मुझे भी पता है कि बहुत मजा आता है, when you are with your family, you have a lot of fun. I looked at my watch, 1:30 in the morning, 1:30 a.m. All right, 1:30 a.m. सर भूल तो नहीं गए? नहीं. Mysterious things, लीजा नहीं भूला हो, बिल्कुल भी नहीं भूला हो. Hello, sir, can't express my inner joy. My dance class has been rescheduled. Awesome. So you will be attending the class. Superb. I'm so happy, Rishima. Okay. तो अब क्या हुआ कि where he was at 1:30 a.m. At 1:30 a.m. he was flying on top of which countryside? फ्रांस के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे, जा रहे थे इंग्लैंड. So he thought कि भाई control room. What is the control room? Do you guys know what a control room is? I want answers in the message box, boys and girls. In the message box, let me know. ठीक है? किसी को पता है control room क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ. Control room क्या होता है? Control room is there are these air control rooms, air traffic control rooms होते हैं. Everywhere in all cities they are there. They help the aeroplanes which are flying to help them with the directions, help them with the immediate जो उनके वो होते हैं, क्या बोलेंगे उसको, मतलब ऑल्टीट्यूड क्या है, कहाँ पे जा रहे हैं, वो सब उनको बता सकते हैं वो लोग. ठीक है. सो दे लुक एट द रेडार एंड दे स्पॉट वेयर द एरोप्लेन इज फ्लाइंग. दैट इज व्हाट अ कंट्रोल रूम डज. बिकॉज कई बार क्या हो सकता है कि बहुत सारे एरोप्लेन एक साथ उड़ते हैं हवा में, राइट? कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दो एरोप्लेन एक साथ कोलाइड कर जाए, उनको पता नहीं है, इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर्स पोजिशंस.
So they clear the positions of the aeroplanes in the sky, right? So as I looked down past the nose of the airplane, I saw the light of a big city in front of me. So he must have been crossing a big city, maybe Paris, maybe some other big city in France. All right. Hi Vishal, how are you? Hello Vishal. So moving on, what happened? I switched on the radio. तो narrator क्या करते हैं? Narrator अपना radio switch on करते हैं and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. तो ये he's trying to contact the Paris control room and he conveys the message. वो क्या बताते हैं कि भाई आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, तो उनको बताते हैं कि आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड और इमीडिएटली उनको एक रिस्पॉन्स आता है पेरिस कंट्रोल रूम से. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, व्हाट? DSO88 आई कैन हियर यू. तो भाई रेडियो कनेक्ट हो चुका था, उन दोनों के बीच में बात हो गई. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट. जैसे कि मैंने बताया कि पोजिशनिंग में हेल्प करते हैं कंट्रोल रूम्स, राइट? तो जो पेरिस कंट्रोल था, जो ग्राउंड कंट्रोल था, वहां से जो आवाज आई, उन्होंने क्या बोला नरेटर को कि 12 डिग्री जो है ना, वो आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ. यू विल बी ऑन द राइट पाथ एंड अ सेफ पाथ. नो अदर एरोप्लेन विल कम एंड क्रैश विद. ठीक है. सो मूविंग ऑन. ऑल राइट, अब आगे देखते हैं भाई क्या हो रहा है. आई चेक द मैप and the compass, switched over to my second and last fuel tank. So I hope that you guys know that there are more than one fuel tank in an airplane because distance इतना ज़्यादा होता है. You sometimes need extra fuel, all right, backup fuel. और भाई आप रास्ते में तो हो नहीं कि आपकी गाड़ी अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो स्लो के रुक जाएगी, नहीं. आप हवा में हो, you're airborne. If the fuel finishes in an airplane, you know what is going to happen, right? So that is why there are extra fuel tanks. So the author, he switched over to his second and last fuel tank. तो उनका last fuel tank जो था वो उन्होंने switch on कर लिया था and turned Dakota to 12 degrees west towards England. और उन्होंने सोचा भाई चलो मेरे को directions clear हो गए. Now everything is fine. I'm on my route. I'm en route to England to my house. और कल सुबह जो है मैं मजे करूंगा अपनी फैमिली के साथ, बहुत सारा फन करने वाला हूँ. I'll be in time for a good big English breakfast. He was looking forward to an English breakfast. भाई English breakfast कितने लोगों ने यहाँ पे खाया है? आजकल तो English breakfast you get on Zomato also. So there are a lot of amazing things in an English breakfast. तो बहुत ही टेस्टी होता है. जो नॉन वेजिटेरियंस है उन लोगों के लिए तो वो मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज है. So and it was an easy flight. It was an easy flight till now. Let me tell you that. जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ये स्टोरी, उन लोगों में पहले बता दूं कि ये सिर्फ अभी तक ही है, थोड़ा चेंज आएगा. सर मैंने गलत नेम डाल दिया गलती से मेंटी में. कोई बात नहीं विशाल, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. ऑल राइट, मूविंग ऑन. चलो आगे देखते हैं. Paris was about 150 kilometers behind me. Boys and girls, ये जो numbers है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 12 degrees, 150 kilometers, और ये जो names हैं, इंग्लैंड, पेरिस, ये सब जरा याद रखना. इसी के ऊपर मेंटी है. रिविजन इस चैप्टर का है, तो मैं आपको पहले से ही क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि जो मेंटी है वो इसके ऊपर ही होने वाला है. So just keep that in mind. All right. When I saw the storm clouds, अब क्या हो गया कि 150 किलोमीटर जो है वो जा चुके थे. Paris was about 150 kilometers behind. He had crossed Paris about 150 kilometers ahead of Paris. He saw some storm clouds, all right, and they looked huge. Now these were not your regular storm clouds. They were really big storm clouds. And आप लोगों को मैं एक ट्रिविया बता रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने फ्लाइट में सफर किया है, that in clouds the pressure is low inside the clouds. So what happens is if you go inside the clouds, कई बार ऐसा होता है कि डिप मारता है plane, and that's the feeling is very dangerous. Normally कुछ होता नहीं है, air pockets बोलते हैं उन लोगों को. So it is a little concerning thing for the pilots. All right. So hello Akansha, how are you? Thank you, and thank you sharing the Menti code. So what happened? They looked huge, like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them. What happened was that वो उसके ऊपर से नहीं जा सकते थे. क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचे थे and I did not have enough fuel to fly around them. आप सोचो कि क्लाउड है इतना बड़ा सा. Now there are only two options, right? या फिर तो उसके ऊपर से निकल जाओ या फिर उसके अराउंड निकल जाओ. अराउंड निकलोगे तो ज्यादा आप स्पेस कवर करोगे, उतना फ्यूल है नहीं हमारे नरेटर के पास. तो ऑप्शन क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा, राइट, टू गो थ्रू द क्लाउड्स. ऑल राइट, लेट्स सी. सो I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or the south. चलो देखते हैं क्या होता है. काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो आ गया. अभी थोड़ी देर पहले एकदम क्लियर स्काई था, बट after 150 kilometers across Paris, away from Paris, this huge storm clouds have appeared, and it's a little bit of a problem for the pilot. Because why?
because he can't fly above them or around them. Lack of fuel, so he has to be very very careful. I ought to go back to Paris, I thought. एक बार उनको ये डाउट आया, एक बार उनको ये थॉट आया दिमाग में कि यार मैं वापस चला जाता हूँ, क्योंकि बाद में भी जा सकता हूँ, ठीक है. आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम. लेकिन हमारे नरेटर को क्या हो गया, घर जाना था. सर आई एम लेट, सो प्लीज टेल मी वेयर डज द ऑथर इज गोइंग. अच्छा अश्मित, द ऑथर इज गोइंग टू इंग्लैंड, ठीक है. ही वाज फ्लाइंग अबव फ्रांस, ही इज गोइंग टू इंग्लैंड, एंड वहां पे बीच में उनको इनकाउंटर हुआ है, बीच में रास्ते में इनकाउंटर हुआ है एक स्टॉर्म क्लाउड. और अब उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा, he thought about it, he gave it a thought. What did he think? He thought that should I go back to Paris? But he was too, he was too interested to go and meet his family and have that English breakfast. ठीक है, English breakfast कितने लोगों ने कभी ऑर्डर करके खाया, मुझे जरूर बताओ, जरूर बताओ, मुझे पता है, because I love English breakfast. हर संडे को मैं मंगाता हूँ वो, ठीक है. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. ओ माय गॉड, ये रिस्क ले लिया भाई हमारे नरेटर ने. क्या किया उन्होंने, उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, डर के आगे जीते, चलो आगे जाते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, ठीक है. इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. अब क्लाउड के एंटर होते ही, इट्स द अनु. हाय, इट्स द अनु. योर नेम इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, यू शुड बी इट्स अनु. ऑलराइट, सो निखिल, ऑलराइट, हाय हाय हाय. सो लेट्स मूव ऑन. हिमांशु, हाय हिमांशु, हाउ आर यू बच्चा. तो अब क्या होता है, अब क्या होता है कि what happens is he he basically has to go home and he enters that cloud. वो सोचता है अब देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, चलो देखते हैं क्या होता है. Inside the cloud it was pitch black. भाई pitch black ही होगा, अगर storm clouds है तो बहुत ज्यादा डार्क होंगे, और अगर बहुत ज्यादा डार्क होंगे तो अंदर कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है. So straight into the storm, inside the clouds, everything was suddenly black. The old aeroplane jumped and twisted in the air. मैंने आपको क्या बोला था, प्रेशर डिफरेंस होता है, उस वजह से स्टॉर्म क्लाउड है ऊपर से, तो अंदर बहुत एयर की जो वेलोसिटी होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी. तो the plane started jumping and twisting in the air. ऊपर नीचे इधर उधर होने लगा एरोप्लेन, and that is a little dangerous. जो भी एरोप्लेन में ट्रैवल कर चुका है उसको मैं उसको तो पता ही है, जो नहीं किया, जिसने भी नहीं किया उसको मैं बता सकता हूँ that it is not a very comfortable feeling to be going up and down and around in the middle of the sky, because we are all terrestrial creatures, we are not birds, we are not used to the feeling of floating in the air that much. जब सही जाता है तब तो मजा आता है, जब थोड़ा ऊपर नीचे होना चालू होता है तो सारे हमारे हनुमान चालीसा और सारे जितने भी ऑल द रिलीजियस बुक, बाइबल, कुरान, एवरीथिंग जो है सब याद आने लगते हैं, ठीक है. सो आई लुक्ड एट द कंपास वाज डेड. अब कंपास आपको पता है ना क्या होता है, कंपास से हमें डायरेक्शन दिखता है, तो डायरेक्शनल हेल्प जो होता है वो कंपास से मिलता है एयरप्लेन के अंदर भी, ठीक है. द कंपास वाज डेड एंड वुडंट वर्क. ओ माय गॉड, द कंपास वाज डेड. नरेटर के फ्लाइट का कंपास ही डेड हो गया था. अब उनको ये पता ही नहीं चल सकता कि वो कहाँ पे है. ही हैज नो सेंस ऑफ हिज डायरेक्शन एनीमोर. ऑलराइट, मजामा सर. ऑलराइट हिमांशु, क्या बात है, क्या बात है. नॉट एवरी टाइम बट सम टाइम. ऑलराइट, हाय सिमरन बच्चा, हाउ आर यू, हाउ आर यू. आई एम गुड. तो होता क्या है, द कंपास वाज डेड एंड वुडंट वर्क. The other instruments were suddenly dead too. ओहो, अब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई. क्यों? कंपास भी डेड हो गया और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट है वो भी धीरे धीरे डेड होने लगे. I tried the radio. Paris control, can you hear me? The radio was dead too. Now, radio is a very very important tool. ये वो ट्रांजिस्टर वाला रेडियो नहीं जिसमें शाम को FM के शोज आते हैं. This is the radio that connects the pilot of the airplane to what? To the control rooms, जहां पे उनको information मिलती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है. So now the radio, the one piece of instrument that would connect the pilot with the control room is also not working. Compass is not working. Some other instruments have stopped working, and the radio is dead too. Bad situation. Pilot with his Dakota, DS-08 is where? He's inside a storm cloud, which is pretty huge. He's still inside, and all these instruments have turned dead on him. That is a bad situation, boys and girls. क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? काफी गंदा सिचुएशन में आ गए यार हम लोग. I mean not हम लोग, but ये जो पायलट है. So I hope that you can visualize this. I'm trying to make it as visually वो जितना मैं कर सकता हूँ. So I could not see where I was. भाई पायलट को नहीं दिख रहा था कि वो कहाँ पे थे. I was lost in the storm. As I told you, the pilot is now lost. No radio contact, no compass working. कैसे पता चलेगा उनको? He's inside his airplane. Then in the black cloud quite near me, I saw another aeroplane. यहाँ पे आया कहानी में twist. कैसे आया कहानी में twist? उनको बाजू में, like next to him, he saw another airplane.
I had no lights. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. So this aeroplane had no lights. ऑलराइट, नॉर्मली आपने देखा होगा रात को जब प्लेन आपने कभी भी आसमान में देखा हो तो लाइट्स ब्लिंक करती है. दैट इज द ओनली वे दैट you the other airplanes can see that particular airplane, right? Very very prominent light, right? Yes, twist आ गया शिवांगी, बिल्कुल बिल्कुल twist आ चुका है इस कहानी में. And I could see the pilot's face turn towards me. So now this airplane without the lights, it had a pilot also. भाई pilot तो हो गए. He lifted one hand and waved, and he was trying to say follow me. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना हाथ, जो बाजू का जो पायलट था उसने हाथ दिखाया हमारे नरेटर को और बोला कि फॉलो मी, आ जाओ हमारे पास. Let us see what happens. I thought he's trying to help me. So अब of course नरेटर फंसे हुए थे, उनको समझ में आ गया कि ये जो पायलट है, ये जो बंदा है दूसरे वाला एरोप्लेन में जिसमें लाइट्स नहीं है, we can call it the black aeroplane. ठीक है, तो उन्होंने समझ लिया कि he is trying to help. So that is why आर्या जल्दी जल्दी आ जाओ, अभी भी स्टार्ट हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके. हाय निहारिका, अच्छा निहारिका, हाय निहारिका, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन. ऑलराइट, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. He turned his airplane slowly to the north. उन्होंने जो है, जो ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट थे, उन्होंने नॉर्थ की तरफ अपना एयरप्लेन टर्न किया इन फ्रंट ऑफ माय डकोटा. ठीक है, अब ये नरेटर के पर्सपेक्टिव से हो रहा है पूरा स्टोरी. सो ही इज नरेटिंग इट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. ठीक है, तो उन्होंने एकदम एरोप्लेन के सामने आके, डकोटा के सामने आके नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन लिया. एंड ही वाज बेसिकली इन अ वे टेलिंग आवर नरेटर ऑन डकोटा टू टेल हिम. ठीक है, टू फॉलो हिम. ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. अब फंसे हुए थे हमारे जो नरेटर थे, और कंपास और रेडियो कुछ चल नहीं रहा है, तो ये उनको लगा कि चलो कम से कम इतना तो हुआ एटलीस्ट, दैट दिस airplane, this weird aeroplane with no lights is at least trying to help me out. Let us see what happens. And he started following him. He was following him like an obedient child. हाफ एन आवर निकल गया भाई, फॉलो करते रहे, टेल कर रहे हैं इस एरोप्लेन को. हाफ एन आवर लेफ्ट, हाफ एन आवर, after half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे तक टेल करते 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 एरोप्लेन जो है, ब्लैक एरोप्लेन सामने जा रहा है और हमारे जो नरेटर का एरोप्लेन है उसको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, एंड okay, you can go anywhere if you want, don't worry about it. All right, if anybody wants to leave without my explanation ending, most welcome, you can go, no problem. All right, and whoever wants to stay, please, you are the logical students, please stick back and let's complete this and we will do the Menti, no questions about it. There was only enough fuel in the old Dakota लास्ट टैंक, जैसे कि आपको पता है सेकंड टैंक पे थे और सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का फ्यूल बचा हुआ था. सो दैट वाज कॉजिंग अ कंसर्न, दैट वाज कॉजिंग सम काइंड ऑफ अ कंसर्न इन आवर पायलट्स हेड, बिकॉज उनको टेंशन हो रही थी यार कि क्या अगर फ्यूल खत्म हो गया और हम लोग निकले नहीं इस क्लाउड से तो क्या होगा. I was starting to feel frightened again. The narrator was starting to feel frightened. He was getting scared because the fuel was getting less. Then he started to go down. अब ब्लैक एरोप्लेन जो है वो नीचे की तरफ जाने लगा, एंड ऑफ कोर्स आवर नरेटर ही फॉलोड हिम, एज सिंपल एज दैट. ऑलराइट, नाउ यस, नथिंग इज वर्किंग एक्सेप्ट फॉर भाई स्टीयरिंग चल रहा है और प्लेन ऑन है, बस इतना ही है, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा है डकोटा में भी. तो सामने वाला जो एरोप्लेन था, जो ब्लैक वाला एरोप्लेन था, वो जो है वो नीचे की तरफ जाने लगा और हमारे नरेटर ने भी उसको चुपचाप आंख बंद करके ट्रस्ट करके फॉलो किया. ठीक है, देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. Suddenly, I came out of the cloud and saw two long straight lines of light in front of me. Oh my God, एक और ट्विस्ट आ गया कहानी में. अब आधे घंटे बाद जब नीचे गया वो दूसरा प्लेन, उसके पीछे पीछे नरेटर का डकोटा भी, जो डकोटा एरोप्लेन था वो भी नीचे गया, और सडनली क्लाउड से निकल गए वो लोग. और क्या दिखा एरोप्लेन, क्या दिखा हमारे नरेटर को? He saw two straight lines of lights in front of me. What does that signify? भाई बहुत सिंपल बात है. Two straight lines of light कहाँ होता है? रनवे पे होता है. Yes, रनवे दिख गया था उनको. इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट एंड आई वॉज सेफ. फाइनली भाई सेफ हो चुके थे. आधे घंटे ट्रैवल करने के बाद पिच ब्लैक में ये जो ब्लैक एरोप्लेन था, इसको टेल करते 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 फाइनली वो निकल गए थे. एंड दैट वाज प्लेटफॉर्म नहीं बचा, प्लेटफॉर्म नहीं, इट वाज अ रनवे, इट वाज नॉट अ प्लेटफॉर्म. ओके, एंड यस, इट वाज एन एयरपोर्ट. बिल्कुल सही बात ज्योतिका, बिल्कुल सही बात. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड देन? व्हाट हैपेंड वाज दैट now the narrator was safe. He could see the runway और उनको lights भी दिख रही थी, तो he would land properly. Now I turned to look at my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. एक और twist, कहानी में twist पे twist पे twist. भाई अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे
जो ब्लैक एरोप्लेन था, जिसको जिसको फॉलो करके हमारे नरेटर साहब बच गए, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है, उसका कोई नामो निशान ही नहीं है हवा में. सो द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन. I could not see it anywhere. There was no sign of that black aeroplane anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. इसका मतलब है कि उनकी जान में थोड़ी जान आई. He was pretty happy to deboard from that airplane and just walk away because काफी ऊपर नीचे हुआ इस ट्रिप में उनके साथ, right? Am I right or not? So moving on. I went and asked a woman in the control center where I was and who was the other pilot. I wanted to say thank you, भाई. जिसने जान बचाई है उसको थैंक यू तो आप बोलोगे ही बोलोगे, राइट? सो दैट इज व्हाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दिस पार्ट इज कि वो बोलना चाहते थे उसको थैंक यू. तो उन्होंने पूछा, देखो कंट्रोल रूम में जो रेडार रहता है उसमें एरोप्लेन जो है वो दिखते हैं, ठीक है, जो नीचे बैठे रहते हैं उनको दिखते हैं. बट व्हाट हैपेंड, द लेडी जिससे इन्होंने बताया, जिससे नरेटर ने बोला कि मुझे बताओ भाई वो दूसरा एरोप्लेन कहाँ है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. She looked at me very strangely and then laughed. तो ये जो लेडी थी कंट्रोल रूम में, उन्होंने उनको देखा और वो उनको देख के ऐसे बोली, फिर थोड़ा सा वो हंसने लगी. No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. एक और ट्विस्ट, महा ट्विस्ट आ गया भाई. यहाँ पे क्या हो गया कि एक भी एरोप्लेन नहीं था इस एरोप्लेन के अलावा. तो फिर हम लोग तब से कौन से एरोप्लेन की बात कर रहे थे? ये क्या हो रहा है स्टोरी में? आई हैव नो आइडिया. ग्रे एरिया आ गया भाई, ग्रे एरिया आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं है. Who helped me arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? वो एरोप्लेन कौन था? वो पायलट कौन था? Who was the pilot of that strange black aeroplane flying in the storm without lights? कौन था? कोई आइडिया है? आप लोग मुझे बताओ, आप लोग को क्या लगता है वो कौन था? I want to know because इस स्टोरी में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है. So boys and girls, this is the end of the story. Hello Ranjita, how are you? Sir, please short recap. Arya, short recap. Oh my God, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. Okay, शिवांगी सिंह, घोस्ट. It could be a ghost. तो आर्या एकदम शॉर्ट रिकैप ये देता हूँ. पायलट था, वो उड़ रहा था, वो एक स्टॉर्मी क्लाउड में फंस गया और उस स्टॉर्मी क्लाउड में फंस के उसने एक और एरोप्लेन देखा. एक और एरोप्लेन जो था उसने उसको हेल्प किया. उस एरोप्लेन में लाइट्स नहीं थी, ठीक है, तो उसने उसको हेल्प किया और जब वो क्लाउड से निकला तो वो एरोप्लेन गायब हो गया. जब नीचे उतर के उसने पूछा कंट्रोल रूम पे कि दूसरा एरोप्लेन कहाँ था, तो रेडार पे कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं दिख रहा था उस लेडी को जो कंट्रोल रूम में बैठी थी. तो वो कौन था भाई? कहाँ से आया वो एरोप्लेन? बताओ, मुझे भी नहीं पता है. Illusion. Very interesting, Beena. Superb. So I like this. It could be an illusion. Sometimes we pump ourselves up when we are in a troublesome situation to, get us out. It could be a full construct inside the mind of a pilot also. Very interesting. चलो boys and girls, ready हो मेंटी के लिए? 10 questions revision फटाफट करते हैं. चलो आ जाओ. Let us begin, boys and girls. All right. Menti code is 5554462. 5554462. All right. जल्दी से आ जाओ. ऑथर नेम शिवांगी बच्चा, ऑथर्स नेम इज फ्रेडरिक फॉर्सिथ. ऑलराइट, फ्रेडरिक फॉर्सिथ. ऑथर्स नेम इज फ्रेडरिक फॉर्सिथ. मैसेज, यू कांट डाई एट द एंड, नो वन नोस हु हेल्प हर. इंटरेस्टिंग. हेल्प हर नहीं बच्चा, हेल्प हिम नॉट हेल्प हर. तो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, अपने दोस्तों को बुला लो भाई, क्लास 10 के बच्चे. कम ऑन, क्विक. लेट अस गेट दिस मेंटी गोइंग. So as you guys know, this is related, all the questions are related to the chapter that I've just discussed with you. ठीक है, तो कोई डाउट है तो अभी पूछ लो बिफोर वी स्टार्ट. सर आज भी टॉप 2 सर्टिफिकेट्स. बिल्कुल सिमरन, आज भी टॉप 2 सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे. I can see 18 people already joining in. Okay, 19 people have joined in. Superb, good job भाई. क्या बात है. चलो आ जाओ, जल्दी से देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे. All right, you're most welcome बच्चा. All right, I am gonna start. एक दो और बच्चों को वेट कर लेते हैं. चलो अपने फ्रेंड्स को बुला लो जल्दी से. कम ऑन, कॉल अप योर फ्रेंड्स यार. आपके क्लास 10 के जो बच्चा पार्टी है, आपके फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोग को भी बुला लो. ठीक है. ओ सुपर्ब अनु, आपने एकदम सही कर लिया. सुपर्ब. यस ऋषिका, पूछो मुझसे. क्या पूछ रहे हो? जल्दी से पूछो. अच्छा, जल्दी से स्टार्ट. मेंटी ट्यूशन है. चलो ठीक है, मैं कर रहा हूं अपना अवतार छोटा. Here becomes me into mini me. All the best. Absolutely crack it. Best of luck. ठीक है. I am going to guess your emoticon, Lisa. बिल्कुल. चलो. All the best. बचपन का प्यार. अरे यार ये मत स्टार्ट करो यार, ये गाना ना, I really dislike this song. Okay, first question. The title Black Aeroplane is based on the pilot's aeroplane in the stormy sky, the aeroplane that helped the pilot. Very simple.
जिसने इस चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से, he will absolutely crack it, and 15 people have absolutely cracked this particular question. क्या बात है, क्या बात है। चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है लीडर बोर्ड पे स्कोर। ओ हो। All right. Hiteshi is at number one. Niharika is at number two. Simran at number three. Lisa at number four. Anshika is at number five. And AQ birthday in November. Please, AQ is at number six. Ashmit is at number seven. Raj at number eight. Anne is at number nine. And Nikhil is at number 10. क्या बात है, क्या बात है। Superb. चलो, next question. Because net issue. Oh, Anu, please refresh your internet once. You will get it. ठीक है? चलो, let us see the next question. Here it goes. All the best. The pilot was flying from to. कहां से कहां तक fly कर रहा था pilot? From England to France, from England to India, और from France to England. क्या लगता है आप लोग को? क्या लगता है? England to France, England to India या France to England? क्या बोल रहे हो? Attitude Queen. Okay. All right, Attitude Queen and Joffin Attitude Queen. Cool. 16 people have given the correct answer. बच्चा इंग्लैंड टू फ्रांस नहीं जा रहे थे, फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहे थे। All right, moving on. आर्या लेट हुआ ना तुम, लेट हुई ना तुम, इसलिए तुमको ये नहीं आया। क्यों लेट हुई मेरी क्लास में? तुम ऐसे करते हैं जल्दी आगे बच्चा प्लीज। All right, Hiteshi is at number one, Anshika is at number two, Lisa at number three, Ashmit at number four, Raj at five and six, Nikhil at seven, Himanshu is at eight, Simran at nine, and Ashna is at number 10. All right. Moving on. Okay. Moving on. चलो भाई आगे देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। 23 participants and only 16 likes. Not cool. All right. बाकी लोग भी like कर दो ना। चलो, moving on. What was the pilot looking forward to? What was the pilot looking forward? What were the plans to meet his family for his holiday? Yeah, both one and two. Very simple यार, बहुत ही simple answer, बहुत ही simple answer है। And patience नहीं दिखाया, 5 बच्चों ने गड़बड़ कर दी। बच्चा प्लीज, मैं क्या बोलता रहता हूँ, patiently read the options properly. Both one and two is the correct answer. 19 people got it right. All right, बिल्कुल सही लीजा, सही। मैंने आपका गेस किया कि नहीं नेम? सर आई वाज गिविंग बुक्स टू माय सिस्टर। ओहो, अच्छा ठीक है, दैट इज फॉरगिवेबल। ठीक है, कोई बात नहीं। बट आर्या, आई एक्सपेक्ट यू ऑन टाइम इन माय क्लासेस बिकॉज़ यू आर वन ऑफ माय ओल्डर स्टूडेंट्स, राइट? सो आई डू एक्सपेक्ट यू इन माय क्लासेस ऑन टाइम। Hitesh is at number 1, Anshika at 2, let's rock. Nikhil is at 3, Raj at 4, Anne at 5, Ashmit 6, Simran 7, Ashna 8, Khushi is at 9, and Adi is at 10. Adi has cracked into number 10. Awesome. क्या बात है। All right. So, next question. Here it comes. Which control station did he contact on his way? Of course, we are talking about the narrator here. All right. Which control station did he contact on his way? Was it Paris? Was it England? Or he didn't contact any? अब भी पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को अच्छी तरह से ये बात पता होगी। आई एम very confident about it. Time is about to be up. 20 people have answered. Why the other 4 are not answering? क्या हो गया? Time is up, and 17 people have gotten this answer absolutely correct on the spot. Boss, क्या बात है, superb, very good. All right, बिल्कुल सही जवाब अश्मित। A, yes Lisa, correct, right answer. And Anshika is at number 1, Nikhil at 2, Raj is at number 3, Anne is at number 4, Ashmit 5, Simran 6, Khushi is at 7, Adi is at 8, Shubham is at 9, and Shaivi has made her top 10 entry at number 10. Good job, Shaivi. Good job. Boys and girls, do like my video. That helps me. I'm helping you. You need to help me also. So, all the 21 participants, do put a like on my video. My smile increases. All right. Next question. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. What? क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पे? किस चीज का डिस्क्रिप्शन है? Are these the black plateaus? Are these tall buildings? Or are these storm clouds? क्या लगता है? अगर ये आप लोगों ने मेंटी अच्छी तरह से कर लिया ना बॉस, you will be very clear with this particular story in your head, and that is exactly what I want. MCQs. That's what I'm after.
21 people have given the correct answer. What a beautiful, percentage of right answers. I'm enjoying this. मुझे मजा आ रहा है. Easy, easy. Yes, 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 sir. Where do you live in Bangalore? Rishika, I live in Kormangla. I live in Kormangla. Awesome. Chalo. Anshika has climbed up to number one. Nikhil is at number two and three. Raj four. Simran five. Ashmit is at six. Adi is at seven. Khushi is at eight. Shubham is at nine. And Shavi is at number 10. Come on. Top five. Hold your positions. 5 to 10. Get into the top five. That is the spirit. Chalo. All right. Hi Azam. How are you? I think you are coming into my class for the first time. Welcome. All right. Chalo. Question number six. ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे बचे सिर्फ अब वी आर halfway through. What risk did the pilot take? What do you think is the risk that the pilot took? Flying back to Paris, flying his old Dakota straight into the storm? Yeah, he took no risk. Very simple, very simple. All right. I live near HSR layout. अरे ऋषिका, then we are pretty close by यार, आसपास ही रहते हैं. What risk? जल्दी बताओ, टाइम अप होने वाला है, टाइम अप होने वाला है. चलो चलो, मिसक्लिक कर दिया अश्मित ने. अरे जोश में आके मिसक्लिक कर दिया रे, जोश में आके मिसक्लिक कर दिया. चलो, the right answer is flying his old Dakota straight into the storm. That is exactly what the right answer is, and 19 people have gotten this answer on point. Good job done. Good job done. देखते हैं leaderboard. Remember, the winner and the first runner-up gets the certificates from me. All right. चलो देखते हैं भाई, points हो गए decide. Anshika is at number one. क्या बात है, क्या बात है यार. Hi sir, hi Anshika. Nikhil is at number two and at number three. Raj at four. Simran at five. Adi at six. Khushi is at seven. Hiteshi is at eight. Fastest answer is बार. Shavi at nine and Lucky high five भैया. अच्छा Lucky भी आ गए भाई top 10 में. क्या बात है Lucky. Good job done बच्चा. All right. Sir, I am Shavi. अच्छा आप Shavi हो. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. The favorite गलती से चला गया. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है. All right, I'll come at 6 p.m. session, sir, because I'm in class 9. ठीक है बच्चा ऋषिका. All right, I'll see you at 6 p.m. session. 6 p.m. session for class 9. Fun they had, Sound of Music, Mix Menti. Whoever class 9 is, come down. What instruments had stopped working during the storm? The compass, the radio, or both of them? चलो एक गेस दे रहा हूँ भाई. कंपास जो था वो डेफिनेटली खराब हो गया था. ठीक है, डेफिनेटली खराब हो गया. बहुत बड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया है. यस, 18 people have gotten it correct. कंपास तो खराब हुआ ही था भाई, रेडियो भी खराब हो गया था. That was the reason why our narrator, the pilot, was not able to get in touch with the control room after he entered the storm, right? All right, and that is why he was so concerned. That is why he was so tensed about his situation and position. Let us see. Points are getting calculated, and there is a topple in the ranking. Nikhil is at number one. Anshika has climbed down just one spot to number two and has climbed up to number three. Simran at four. Adi at five. Hiteshi is at six. Shavi is at seven. Lucky is at eight. Raj is at nine. And Ashmit is at number 10. All right. All right. ओहो शिवांगी का ट्यूशन से छुट्टी है. ओहो बल्ले बल्ले, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. All right. Moving on. Next question. Let us see what the next question has in store for us. What was the pilot not sorry about? What was the pilot not sorry about? Hear this out properly. ठीक है? Driving the plane into the storm, risking the lives of fellow passenger, both one and two. क्या लगता है आपको? क्या लगता है? ट्रिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से. बहुत ट्रिकी है ये क्वेश्चन. And time is up. No, 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 no. Risking the lives of fellow passengers. Who are the fellow passengers? He was alone in his aeroplane, driving into the storm. उसने finally जो है अपना एक stand लिया और उन्होंने बोला कि नहीं मैं जाता हूँ यार. So he was not sorry about that. Of course, he was not sorry about also leaving the plane when it had landed, but that was not in the option. The option was driving the plane into the storm, risking the lives of fellow passengers. Nope. Wrong answer. GC. बड़ा वाला GC हो गया. All right. शिवांगी, today I'm not in the leaderboard. कोई बात नहीं शिवांगी, बस ट्राई करते रहो. ट्राई करना बहुत जरूरी है. Trial is the best way to win eventually. Anne has climbed up to number one. Shavi is at number two. Nikhil is at number three. Anshika is at number four.
Simran is at number 5, Ashmit is at number 6, Adi at 7, Hiteshi at 8, Lucky is at 9, and Raj is at number 10. All right. So can you speak in Kannada? No, actually not, Rishika. But I'll slowly learn. I'll learn it. Like at least a little bit to seek lunga. Zarur, because now that I'm in Bangalore, I need to learn the language of the city. Last two questions. Here comes the second last question. Question number 9. How far the narrator how far was the narrator from Paris when he saw dark clouds in the sky? जिसने ये मेरे साथ अभी भी पढ़ा है उसको ये बात पता होना चाहिए 100%, बिकॉज मैंने बार बार बताया था पेरिस से कितने 100 किलोमीटर दूर थे, 100 किलोमीटर थे, 200 किलोमीटर थे कि 150 किलोमीटर थे. 2, 1, time's up, answers are in, let's see. And 16 people have gotten this answer absolutely on the spot. Kya baat hai. Good job done, boys and girls. Good job done. All right. How far was the narrator from Paris when he saw dark clouds in the sky? He was 150 kilometers away from Paris. That is when he saw. Yes, Lisa, absolutely correct. Shivangi, bilkul sahi jawab. All right, all right, all right. Superb. Good job, good job, good job. चलो आगे देखते हैं. देखते हैं लीडर बोर्ड में क्या बता रहा है. लीडर बोर्ड बता रहा है कि एन है टॉप पे, शेवी है नंबर 2 पे, Anshika is at number 3, Let's Rock, Nikhil is at number 4, Simran at 5, Ashmit at 6, Adi at 7, Hiteshi at 8, Lucky is at number 9, and Raj is at number 10. All right. Last question, boys and girls. Best of luck. ठीक है, फोड़ दो. चलो, go for it. Don't misclick. ठीक है. All right. Here it comes. Here it comes. When the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, in which direction did he turn the aeroplane? Was it south? Was it north? Or was it east? What do you guys think? What do you guys think? Ha 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 ha. सोचो सोचो, याद करो, याद आ जाना चाहिए. सिंपल क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. Time is up, answers are in, and I knew it. I knew it. ये थोड़ा सा GC हो गया, but still 11 people have gotten it absolutely on point. And yes, it was north. He turned his aeroplane north, towards north, and told or signaled our author to follow him. Right? So that is what north is the correct answer. And ready ho? Yes, Arya, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही. शिवांगी पूछो, पूछो. GC, हाँ, इतना भी GC नहीं था, इतना भी GC नहीं था. अच्छा, आर्या ने तुक्का लगाया था. ओके ओके ओके. All right, got that, Arya. All right, let us see the final points. Final points are in, and there could be a oh ho Chevy. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार. जल्दी से आपने फुल फ्लिप मारा. लास्ट में अंशिका was there at the top, but she topped Anshika right at the last question. Chevy is our champ, undisputed champion of the Menti quiz for this particular topic. Let us clap for her. Good job done. Good job done. बहुत सही, बहुत सही. And also Anshika, good job. First runner up. Good job done. And all the other ones, all right, all the other ones. Ashmit 4 पे आ गया था यार. Nikhil 5 पे. Good job यार. बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही. All the top 10. I congratulate all of you. But Chevy is the winner. Let us take the screenshot, and I'm going to share, I'm going to share the certificate, and I will also share the screenshot of your points. दोनों चीज आप लोगों को share कर दूंगा, and Anshika will also get a certificate. This is so cool. I love this. Alright, I really like this कि सारे बच्चे ना यहाँ पे congratulate करते हैं. इतना अच्छा spirit दिखता है ना यहाँ पे. I love this. All right, that brings us to the end of this session. बच्चा पार्टी कैसा लगा session? मजा आया? Did you guys have fun? मुझे तो बहुत मजा आया. Let me know in the comment section मजा आया कि नहीं आया. Alright, did you guys have fun? And also सिर्फ मजा नहीं, entertainment सिर्फ नहीं. क्या आपको चैप्टर क्लियर हो गया कि नहीं, ये भी मुझे बता देना. कुछ डाउट है तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है. कुछ भी हो जरूर मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहना बच्चा पार्टी. I am very far from you. I am coming through a computer and you guys are looking at me from your phones and your computers. So वो connect जो है जैसा एक normal class में होता है, I want that connect with my students. So that is why I keep asking you. मजा आया कि नहीं? Sir, day after tomorrow is my birthday. All right, and awesome. Sir, where will you share the certificate? I will be sharing the certificate on just 9th and 10th TG group. All right, the Telegram group, and also on my Telegram group, which is the last English teacher.
and also my doubt solving group, which I cannot share information right now, but बहुत जल्दी उसका भी information मैं share कर दूंगा. But in either of the TG group, you can go and collect your certificates. All right. I hope that I've clarified your doubts. And with that, crystal clear. All right. Lisa बोल रही है crystal clear हो गया. Sir, if not do one misclick, I will become the first. कोई बात नहीं अश्मित. आपका ग्रामेटिकल एरर काफी है इसमें, बट मैं आपको अभी नहीं टोकूंगा, बट कोई बात नहीं. आप फोर्थ है, गुड जॉब डन, बहुत सही. ठीक है सर. विच इज द नेक्स्ट सेशन ऑफ योर्स? गीता, द नेक्स्ट सेशन इज एट 6 PM, बट फॉर क्लास 9 का मिक्स बैग मेंटी होने वाला है. किस किस का? फन दे हैड एंड साउंड ऑफ म्यूजिक. ठीक है. माय होल एम इज दैट आई विल टेक सो मेनी एमसीक्यूज कि जब आप फाइनली टर्म 1 का पेपर देने जाओ ना, मेरे 9th एंड 10th के बच्चे, आप वहां पे score karo 95 plus. That is what I am visualizing. I hope that you are also visualizing the same thing. All right. So awesome, awesome, awesome. ठीक है. तो बता दो मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा. एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो. Did you understand the chapter and did you have fun? I will see you in less than 10 minutes in the channel which is the last English teacher. Right? You guys know that. ठीक है. The last English teacher पे मिलते हैं फटाफट. और थोड़ा सा प्रिपेयर करके आना. 30 क्वेश्चंस है, सॉरी 30 नहीं 15 क्वेश्चंस है, और दोनों चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस. सो आई होप दैट बहुत अच्छा लगा. ऑल राइट मीर. ऑल राइट सर. डेली मेंटी प्लीज. शिवांगी, यू नो अब तो डेली मेंटी ही चल रहा है. डेली मेंटी होगा ही होगा. डेफिनेटली डेली मेंटी होगा. आई हैव अंडरस्टूड दिस एंड आई नो दैट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. सो डेली मेंटी होगा, एक्सप्लेनेशन भी होगा, बट मेंटी भी होगा. और ये वाला जो नेक्स्ट सेशन है इसमें सिर्फ मेंटी है. तो जो मेरे क्लास 9th के प्यारे वाले बच्चे हैं ना, वो सब आ जाना. अपने दोस्त लोगों को भी बुला लेना यार, थोड़ा कंपेटिटिव बनाना. अब आई डोंट वांट दिस 15-20 पीपल, आई वांट एटलीस्ट 30 पीपल. तो थोड़ा मजा भी आएगा. कंपटीशन बढ़ना चाहिए यार. क्या बोलते हो? एम आई रॉन्ग और राइट? लॉजिक है इसके पीछे, राइट? और कॉम्पिटिटिव होगा और मजा आएगा. सो विनर एंड फर्स्ट रनर अप, please look out for your certificates in the respective channels of just 9th and 10th TG group. All right, which is the TG group of this channel. इस चैनल का नाम अभी चेंज हो चुका है. It is CBSE class 10th, but the Telegram group is still called just 9th and 10th. थोड़े दिनों में वो भी चेंज हो जाएगा. I will give you that information. और the last English teacher का Telegram group. All right. So on that one, sir grammar complete किया है आपने? सर ग्रामर कंप्लीट किया है? नहीं, ग्रामर कंप्लीट अभी तक नहीं किया है, बट ग्रामर जो है वो भी कराता रहूंगा मैं. आप टेंशन मत लो. पूरा सिलेबस अभी कवर नहीं हुआ है, बट मैंने काफी चैप्टर कर लिए हैं और मैं दोबारा भी कराऊंगा. डोंट वरी अबाउट इट हिमांशु, इट विल बी देयर. ठीक है. ऑल राइट, ऑल राइट बच्चा. आई वुड नो व्हेन इज योर बर्थडे ऋषिका. मैं कैसे बताऊं तुमको? ओके ठीक है. यस आई एम कमिंग बिकॉज़ टुडे इज माय ट्यूशन लीव. ऑसम. सो बॉयज एंड गर्ल्स, सी यू एट 6 PM sharp with class 9 Menti quiz, fun they had, and which one? Sound of music. Yes, I will see you. ठीक है. चलो. See you. Bye bye. Have a good day. And for those who are not joining me, bye bye. I'll see you tomorrow. For those who are joining me, see you in 10.